Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं and the topic that we are going to start today, and of course this topic will be carried on tomorrow as well. कल के सेशन में भी बच्चों हम इसी टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे. So this topic बच्चों is called bubble sort. So we call this topic as bubble sort. And first you should know कि sorting actually होती क्या है. Sorting is actually arranging your elements in any particular order. Like you can arrange your elements in ascending or descending order, or any, or it can be integers, it can be string, it can be any other values. So अगर आप अपने elements को arrange करते हैं in any of the order, either ascending or descending, so that is called sorting. So bubble sort is also one of the algorithm that is used to sort the elements of an array. So let's write down the definition first. It's a sorting algorithm used to sort the elements of an array in ascending or descending order. So बच्चों bubble sort is an algorithm जो आपके array के elements को either ascending order में करता है या फिर descending order में arrange करता है. The mechanism that the bubble sort uses mechanism used is compare and swap. Compare and swap, compare and swap the values. So this is the basic mechanism of the bubble sort, that we compare the elements and we swap the elements. We compare the elements and we swap the elements. So this is the basic mechanism that we used to arrange the elements in an array in any particular order. Now moving forward, and let's talk about the logic behind sorting. मैंने आप लोग को बच्चों एक वेरिएबल दिया, that particular variable was x, and I assigned the value of x as 10. I took another variable y, I assigned the value of y as, let's say, 23. And मैंने यहाँ पे बच्चों एक और वेरिएबल आप लोग को अवार्ड असाइन करा, that is 10. So the task that you need to perform is you need to swap the values. आपको यहाँ पे swap करना है x and y की values को आपको swap करवाना है. सर मतलब like I want के the value of x should become 23 and the value of y should become 10. And you can use to swap the values, आप एक temporary variable use कर सकते हैं. The name of that variable is temp. So how we can perform this task? मैंने क्या करा, मैंने simply बोला
Okay, we have one of the answers. Yes, Saad, we can use this logic. We can. Now what we can do, I assign the value of x to the variable temp. Now you people know that the value of x is 10, तो temp की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, the value of temp will become 10 because the value of x is 10. So मैंने x को असाइन कर दिया temp के अंदर. Now what next I did, मैंने यहाँ पे बोला x is equals to y. So you people know the value of y is 23. अब x की वैल्यू क्या बन जाएगी, it will become 23. And now what I did, अब मैंने बोला y should be equals to temp. And you people know the value of temp is 10. तो अब बच्चों y की वैल्यू क्या बन जाएगी, temp. तो you can see that we have swapped the values. अगर आप लोगों को बच्चों ये लॉजिक क्लियर है, just write down clear in the max chat option. If this logic is clear, just write down clear in the max chat option so that we can move forward. अगर कोई कंफ्यूजन इस लॉजिक के अंदर, I can repeat this logic. वैसे तो बड़ा बेसिक काम किया है मैंने, कि मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया temp, I assign the value x to that variable, then मैंने y को बच्चों असाइन करवा दिया x को मैंने असाइन करवा दिया y, the value of y was 23. तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू भी क्या बन गई, 23. एंड देन मैंने बोला y की वैल्यू 10 कर दो, द वैल्यू ऑफ y was 10. तो y की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, 10 हो गई. एंड द वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड. आपके पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या हो गई, स्वैप हो गई. अनाया बेटा आपको क्लियर है, उसैद ये लॉजिक क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. And again, this is the basic logic that we are going to use in bubble sort. ये हमारी बेसिक लॉजिक है, यही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे अपने बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम के अंदर यूज करेंगे. श्योर, व्हाई नॉट. मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप करवाना था. आई वॉन्ट के x की वैल्यू 23 हो जाए एंड y की वैल्यू 10 हो जाए. सो व्हाट आई डिड, मैंने बोला एक वेरिएबल लिया मैंने temp, मैंने बोला x की वैल्यू temp हो जाए. सो द वैल्यू ऑफ x वाज 10. ये मैंने असाइन करवा दी किसको, temp को. नाउ द वैल्यू ऑफ temp इज 10. आगे मैंने बोला अब x की वैल्यू अपडेट हो जाए टुवर्ड्स y. सो द वैल्यू ऑफ y वाज 23. अब x की वैल्यू क्या हो गई, 23 हो गई. प्रीवियसली इट वाज 10. अब क्या हो गई, 23 हो गई. और मैंने बोला द वैल्यू ऑफ y शुड बी इक्वल टू 10 एंड वी हैव सीन द वैल्यू ऑफ temp वाज 10. तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, 10. सो यू कैन सी द बोथ वैल्यूज आर बीइंग स्वैप्ड. अब y आपके पास 10 और x क्या हो गया आपके पास 23 हो गया. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई स्वैपिंग. आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करवा दिया, स्वैप करवा दिया. So this is the basic logic that we are going to apply when we are going to use this bubble sort algorithm. I hope this is clear to you now. Moving forward, आगे बढ़ते हैं. Now what I did, बच्चों अभी मैं आप लोग को एल्गोरिथम नहीं लिखवा रहा. First, I will be explaining you the logic of bubble sort. पहले मैं आप लोग को पूरी लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा बबल सॉर्ट की. एंड आफ्टर दैट देन बच्चों मैं क्या करूंगा, फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा द एल्गोरिथम एज वेल. फिर हम लोग एल्गोरिथम भी लिखेंगे, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडर द लॉजिक बिहाइंड द बबल सॉर्ट, कि हाउ वी कैन अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. लेट्स सी. मैंने एक एरे बनाया आप लोग के सामने.
I name this array बच्चों as my list, and the total indexes that we have in this array are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the total indexes that we have in this array बच्चों are 6. I assigned the values like, let's say 23, 8, 11, 50, 20, and let's say 18. So these are the values बच्चों in my array. अब आप लोग मुझे बताएं क्या ये array ascending order के अंदर है, yes या no? Is this array बच्चों in ascending order? So of course this array is not in ascending order. Now we need to apply bubble sort on this array to sort the algorithm. करते क्या है बच्चों हम लोग? We just compare the values of the first index and the second index. पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताएं, the maximum value of the index, इस array के अंदर हमारे पास the maximum value for the index is, anyone? 6. Perfect. You can see the maximum index that we have is 6 and the minimum value बच्चों is 1. Now what I did, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, we compare the first two elements. हम इन दोनों को बच्चों कंपेयर करते हैं and after comparing क्या आप लोग बताते हैं, let's see कि क्या swapping required है. Yes sir, swapping required है because 23 is greater than 8 and we need to arrange the array in ascending order, so we need swapping over here. तो मैं क्या करूंगा बच्चों, I will be swapping these two elements. मैंने इन दोनों elements को क्या करवा दिया, swap करवा दिया. Now your array will look like this. अब बच्चों आप लोग का array will look like this. Done. Now in the next cycle, अब हम लोगों ने पहले क्या किया था, first we compared first index with the second index. In the next cycle, now we are going to compare second and the third index. So अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, क्या 23 is greater than 11? Yes sir, the condition is true. So again what we are going to do, we are going to swap the values. We are going to swap the values. Now your array बच्चों will look like this. Now your array बच्चों will look like this. 8, 11, 23 and so on. Now we compare बच्चों third index with the fourth index. क्या swapping required है? No sir. 23 छोटा है as compared to 50, so no need for the swapping. आपका array बच्चों इसी order में रहेगा. After this, we compare fourth and the fifth index, that is 50 versus 20. क्या swapping required है? Yes sir, बिल्कुल required है. तो बच्चों we are going to swap both of these values. अब इन दोनों values को क्या करवा देंगे? We are going to swap the values. Now your array will look like this. Oops, sorry. Now your array बच्चों will look like this. And at last बच्चों, in the last cycle, now we are going to compare these two elements. क्या swapping required है? Yes sir, बिल्कुल required है because 18 is less than 50. So now we are going to swap these two values. हम इन दोनों values को बच्चों क्या कर देंगे, swap करवा देंगे.
नाउ योर एरे बच्चों विल लुक लाइक दिस. And our first cycle is now completed. We compare and swap, we compare and swap, we compare and swap. You can see हम लोगों ने क्या किया, हर एलिमेंट को कंपेयर किया एंड स्वैप किया, कंपेयर किया एंड स्वैप किया, कंपेयर किया एंड स्वैप किया. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट साइकिल, ये जो आपका आखिरी एलिमेंट होता है बच्चों, नाउ दिस एलिमेंट इज एट इट्स करेक्ट लोकेशन. ये अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाता है. सो इन द नेक्स्ट साइकिल नाउ वी डोंट नीड टू कंपेयर दिस एलिमेंट. हमें इस एलिमेंट को कंपेयर नहीं करना. हम जब कंपेयर करेंगे अगली साइकिल के अंदर, वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू, then these two, then these two, then these two. We are not going to compare the last element, because after completion of the first cycle, the last element is at its correct location. Now अगली साइकिल चलेगी बच्चों आपके पास. In the next cycle now, again हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे with the first two elements. We are going to compare we are going to compare 8 and 11. हम 8 और 11 को बच्चों कंपेयर करेंगे. क्या स्वैपिंग रिक्वायर्ड है? नो सर, नॉट रिक्वायर्ड. दे आर ऑलरेडी इन ऑर्डर बच्चों. देन वी आर गोइंग टू कंपेयर we are going to compare 11 and 23. Sir, क्या स्वैपिंग रिक्वायर्ड है? No, they are in order. After this बच्चों we are going to compare 23 and 20. Yes sir, swapping is required right over here. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करवा देंगे. Now your array बच्चों will look like this. And at last we are going to compare these two values. हम आखिरी वाले इंडेक्स को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज वो अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाएगा. अब बच्चों स्वैपिंग रिक्वायर्ड है? यस सर रिक्वायर्ड है. सो वी आर गोइंग टू स्वैप दीज टू वैल्यूज. एंड नाउ अब आपका एरे बच्चों विल लुक लाइक दिस. 8, 11, 20, 18 and 23. So after completion of the next cycle, after completion बच्चों of the next cycle, अब आपके last two indexes क्या हो गए? Now they are at their correct location. अब ये दोनों बच्चों क्या हो गए? अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ गए. सो दिस मीन्स इन द नेक्स्ट साइकिल अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर नहीं करेंगे. अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंपेयर, we are going to first compare these two. Sorting required? No sir. Then we are going to compare बच्चों these two. Swapping required? No sir. Then we are going to compare बच्चों these two. Swapping required? Yes sir. Swapping required है हमारे पास. And now बच्चों what we are going to do, we are going to swap the elements. अब आपका एरे बच्चों कुछ इस तरह दिखेगा. 8, 11, 18, 20. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस साइकिल अब आपके बच्चों दो नहीं, अब आपके लास्ट 3 एलिमेंट्स क्या हो गए? दे आर नाउ एट देयर करेक्ट लोकेशन. अब अगली साइकिल के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर देम. अब हम अगली साइकिल के अंदर बच्चों इनको भी कंपेयर नहीं करेंगे. अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर ओनली दीज टू. अगेन स्वैपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड देन बच्चों सो ऑन हम लोग आगे आगे मूव करते रहेंगे. एंड वी कीप ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स. ऑल्दो वो सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी आ चुके हैं, बट बच्चों वी आर स्टिल गोइंग टू कंपेयर. और जब तक हमारी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगी, वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड मूविंग फॉरवर्ड.
So this is the basic बच्चों mechanism of the bubble sort. I hope you people are getting the point. आप लोग को यहाँ पे mechanism समझ में आ गया. The mechanism is simple कि हम लोग क्या करेंगे, compare and swap, compare and swap, compare and swap, and after completing the first cycle आपका आखिरी इंडेक्स क्या होता है, अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाता है. तो इन द नेक्स्ट साइकिल नाउ वी डोंट नीड टू कंपेयर द लास्ट एलिमेंट बिकॉज वो अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ गया. फिर अगली साइकिल के अंदर बच्चों एक नहीं आपके लास्ट 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर सो ऑन, ये चलता रहेगा आपके पास. सो लेट्स राइट डाउन द कोड बच्चों फॉर बबल सॉर्ट. लेट्स सी. मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट. फर्स्ट आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स. Declare and compare max index x, y, temp as integer. And I think these are the variables that I'm going to use. अब मैंने क्या करा बच्चों, मैंने सबसे पहले मैक्स इंडेक्स की वैल्यू असाइन करवा दी. You people know the value of maximum index is 6. So I assigned the value of maximum index to 6. Max index is equals to 6. Now मैंने यहां पे बताया बच्चों n compare will be equals to max index minus 1. So the value of n compare will become 6 minus 1, that will become 5. Now अब बच्चों मैंने यहाँ पे for loop लगाया एक, for x is equals to 1 to max index minus 1. So आप लोग का for loop चलेगा बच्चों 1 से लेके max index minus 1, and the value of max index minus 1 is, the value of max index minus 1 is 5. This is your outer loop. तो आपका आउटर लूप इज गोइंग टू रन 1 से लेके 5 टाइम्स तक ये आपका आउटर लूप चलेगा. अब मैंने इनर लूप डिफाइन करा बच्चों फॉर y is equals to 1 to n compare. So the value of n compare बच्चों is max index minus 1, that is also 5. तो आपके पास इनिशियली आपका ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक. अब आप लोग की माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा. दैट क्वेश्चन इज सर आपने यहाँ पे n कंपेयर क्यों रखा, यहां पे भी आप मैक्स इंडेक्स माइनस 1 कर देते. why we are using n compare over here and यहाँ पे max index minus 1? Because the values are both, दोनों की वैल्यू सेम है, that is 5 5. But why you are doing this बच्चों? Because I am going to update the value of n compare. After completion of each inner loop मैं n compare की वैल्यू को चेंज करूंगा. सर क्यों चेंज करेंगे? सर आपने अभी तो बताया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच इनर लूप जो आपका आखिरी इंडेक्स होता है बच्चों वो अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाता है. तो इन द नेक्स्ट साइकिल वी डोंट नीड टू कंपेयर दैट एलिमेंट. सो दैट्स व्हाई हम बच्चों हर साइकिल के एंड में n कंपेयर की वैल्यू को -1 करवा देंगे ताकि वो आपके आखिरी इंडेक्स को क्या करे, कंपेयर ना करे, एंड सो ऑन. सो नाउ लेट्स सी द एल्गोरिथम. बच्चों बबल सॉल्व का बेसिक एल्गोरिथम आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सर कब करा? आपने तो नहीं करवाया. तो बच्चों अगर मैं आप लोग को लेके चलूं तो दिस वाज द बेसिक मैकेनिज्म. ये आपका बेसिक मैकेनिज्म है ऑफ बबल सॉर्ट. कंपेयर एंड स्वैप, कंपेयर एंड स्वैप.
सर करके दिखा दे एक दफा। सो लेट्स सी। सो लेट्स सी बच्चों, अभी क्या करना है हम लोगों ने, वी जस्ट नीड टू कंपेयर फर्स्ट टू एलिमेंट्स। हमें ये दोनों एलिमेंट्स क्या करवाने, कंपेयर करवाने। हाउ वी कैन कंपेयर, मैंने बोला द नेम ऑफ द एरे इज माई लिस्ट एंड 23 बच्चों इज ऑन द फर्स्ट इंडेक्स एंड 8 इज ऑन सेकेंड इंडेक्स। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ y is, the first value of y बच्चों is 1. So what I did, मैंने यहां पे लिखा if my list y is greater than my list y plus 1. So you people know the value of y initially क्या है 1. तो my list y पहले इंडेक्स के ऊपर बच्चों क्या रखा हुआ है, we are having 23. तो what we are going to do, we are going to compare 23 with y plus 1 and the value बच्चों that is on y plus 1 that is 2. तो सेकंड इंडेक्स में बच्चों क्या रखा हुआ है, सेकंड इंडेक्स में रखा हुआ है 8. So 23 is greater than 8. The condition is true. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, we need to swap these two elements. हमें इन दोनों को क्या करवाना है, स्वैप करवाना है. सर कैसे करेंगे, तो बच्चों ऐसे करेंगे. सर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे. सर कैसे करेंगे, लेट मी शो यू. तो मैंने बताया इफ my list y is greater than my list y plus 1, then temp is equals to my list y. So you people know my list y, the value of y is 1. पहले इंडेक्स में हमारे पास क्या रखा हुआ है सर, 23 रखा हुआ है. So the value of temp will become 23. So the value of temp बच्चों will become 23 बन जाएगी. अब मैंने बोला my list y is equals to my list y plus 1. तो बच्चों my list y plus 1 पे क्या रखा हुआ है हमारे पास, सेकेंड इंडेक्स. दिस इज आवर सेकेंड इंडेक्स. तो मैंने बोला जो वैल्यू सेकेंड इंडेक्स की है वो कॉपी कर दो पहले इंडेक्स के ऊपर. तो बच्चों सेकेंड इंडेक्स पे रखा हुआ था हमारे पास 8. तो नाउ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंडेक्स भी बच्चों क्या हो गई 8 और सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू भी क्या हो गई 8. दोनों इंडेक्सेस पे हमारे पास क्या आ गया 8. नाउ मैंने अब बोला माई लिस्ट y plus 1 should be equals to temp and the value of temp बच्चों आपको पता है that is 23. तो अब सेकेंड इंडेक्स पे मेरे पास क्या कॉपी हो जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे मेरे पास आ जाएगा बच्चों 23 और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया एंड इफ. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया नेक्स्ट y. अब ये नेक्स्ट y बच्चों ऊपर लेके जाएगा आपको. नाउ द वैल्यू ऑफ y विल बिकम 2. तो जब y की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, नाउ अब आपको पता है अब सेकेंड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है सर 23 और y प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 3. तो थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है आपके पास 11. तो अब आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू कंपेयर बच्चों दीज टू वैल्यूज. 23 इज ग्रेटर देन 11. अगेन द कंडीशन इज ट्रू. आप फिर क्या करेंगे, स्वैप करवा देंगे. स्वैप का वही फॉर्मूला रहेगा बच्चों,
सेकंड इंडेक्स की वैल्यू आपने कॉपी करवाई, टेम की वैल्यू हो गई 23। आपने बोला जो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है वो कॉपी कर दो सेकंड इंडेक्स के अंदर। सो नाउ सेकंड इंडेक्स में बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 11, और यहां पे भी आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया। अब आपने बोला y+1, दैट इज द थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे कॉपी कर दो 10। सो नाउ द वैल्यू ऑफ थर्ड इंडेक्स विल बिकम बच्चों 23। एंड अगेन एंड इफ बच्चों अगेन नेक्स्ट बार फिर ऊपर जाएंगे बच्चों, नाउ द वैल्यू ऑफ y विल बिकम 4, ओ सॉरी 3। अब आप लोग कंपेयर करेंगे बच्चों थर्ड इंडेक्स विद फोर्थ इंडेक्स, और अब आप लोग जब कंपेयर करेंगे 23 इज ग्रेटर देन 50, द कंडीशन विल बी फॉल्स। तो आप डायरेक्टली कहां मूव कर जाएंगे, टुवर्ड्स एंड इफ। फिर बच्चों आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, देन यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू, then you are going to compare these two, and the same algorithm bachcho will be applied, compare and swap, compare and swap, compare and swap. After completing the first cycle, जो आपका आखिरी इंडेक्स है वो अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर आ जाएगा अगले साइकिल के अंदर। आई डोंट वांट टू कंपेयर दिस एलिमेंट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने यहां पे क्या करवा दिया बच्चों, मैंने एन कंपेयर की वैल्यू को रिड्यूस करवा दिया, एन कंपेयर -1 करवा दिया, और यहीं पे मैंने बच्चों लिखवा दिया नेक्स्ट एक्स। अब ये नेक्स्ट एक्स बच्चों मुझे वापस से ऊपर लेके जाएगा टुवर्ड्स एक्स। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 2, और वापस से आपका लूप बच्चों इनर लूप फिर स्टार्ट होगा फॉर y इज इक्वल टू 1 2, बट दिस टाइम ये 1 से लेके चलेगा बच्चों कहां तक, नॉट 5, ये 1 से लेके चलेगा 4 तक, एंड सो ऑन बच्चों। ये आपके पास कंपेयर करता रहेगा, स्वैप करता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा, स्वैप करता रहेगा, until your whole array is being arranged in ascending order. So this is बच्चों called the algorithm of the bubble sort. This is the new algorithm. Previously it was not part of your syllabus, but अब आपके syllabus के अंदर this algorithm is being introduced in O levels, or of course this is also part of A1 syllabus as well. So this is the basic logic that we compare the elements and we swap the elements. We compare the elements and we swap the elements. And बच्चों this algorithm should be memorized. अगर आपको लॉजिक तो समझ में आनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल आपको ये याद होना चाहिए ये एल्गोरिथम, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज एग्जामिनर डायरेक्टली आपको सवाल दे सकता है कि राइट डाउन द एल्गोरिथम फॉर द बबल सॉर्ट, सो यू नीड टू राइट, यू हैव टू, तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। नाउ लेट्स राइट डाउन फ्यू थिंग्स अबाउट द वेरिएबल्स। नाउ लेट्स राइट डाउन फ्यू थिंग्स अबाउट द वेरिएबल्स, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैक्स इंडेक्स। So when we talk about बच्चों मैक्स इंडेक्स क्या है आपके पास, दिस इज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द एरे। अनदर वेरिएबल बच्चों दैट वाज temp, so this was temporary variable used to store the value during swapping. Another variable बच्चों that we have, let's say x and y, so we use these two variables used as counter, used as counter for the loop. Another variable बच्चों that is called n compare, so you should know number of
elements compared in each inner loop. And you should know बच्चों why we reduce this value after each iteration. After each iteration we reduce the value of n compare because the last element is at its correct location, and we don't want to compare that value. So these are all the variables बच्चों that we used in this cycle, and this was बच्चों not all about the bubble sort. अभी तो bubble sort start हुआ है बच्चों. ये जो एल्गोरिथम है आप लोग का बबल सॉर्ट का, दिस इज द इनएफिशिएंट एल्गोरिथम. हमें यहाँ पे एफिशिएंट एल्गोरिथम भी पढ़ना है ऑफ द बबल सॉर्ट. एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या होता है सर, इनएफिशिएंट क्या होता है, बात करेंगे इसके ऊपर विद टाइम. नाउ अब बच्चों अभी मैंने ये सारा काम करा है फॉर अरेंजिंग द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर एग्जामिनर आप लोग को पेपर में सवाल देते दैट यू नीड टू अरेंज द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सो व्हाट चेंज यू वुड लाइक, क्या चेंज बच्चों इस कोड में होना चाहिए इफ वी वांट टू अरेंज दिस एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो बच्चों बिल्कुल सही, अगर आप लोग को बच्चों इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, देयर विल बी ओनली वन चेंज एंड दैट चेंज विल बी दिस सिंबल. तो दिस इज बच्चों फॉर असेंडिंग, और अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जस्ट चेंज दिस सिंबल टू लेस देन. तो बच्चों फिर आपका एरे क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. तो कितना सिंपल है, आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है जस्ट चेंज दिस सिंबल, लेस देन कर दें तो आपका होल एरे विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं आप, लेट्स सी. अब बच्चों मैंने आप लोग के सामने एक एरे दिखाया, this was my array, the name was my list 1 2 3 4. Now बच्चों क्या ये एरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है, यस और नो? इज दिस एरे अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर? यस. अब बच्चों अगर मैं इसके ऊपर सेम एल्गोरिथम अप्लाई करता हूं, दैट दिस वाज द एल्गोरिथम दैट वी हैव. दिस वाज द एल्गोरिथम बच्चों दैट वी हैव. तो अगर मैं इसके ऊपर सेम एल्गोरिथम अप्लाई करता हूं तो लेट्स सी द मैक्सिमम इंडेक्स इज दिस टाइम 4. आपके पास एन कंपेयर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3, मैक्स इंडेक्स -1 विल बी 3. आपका आउटर लूप चलेगा बच्चों हाउ मेनी टाइम्स, योर आउटर लूप इज गोइंग टू रन 3 टाइम्स. आपका इनर लूप पहले चलेगा बच्चों 3 टाइम्स, और सिंस आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर है, योर एरे इज ऑलरेडी इन sorted order,
सो कोई कंपेयर आप लोग जो भी करेंगे, कंपेयर एंड स्वैप, कोई स्वैप ही नहीं होगा, बिकॉज योर एरे इज ऑलरेडी क्या है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। जब आपका पहला इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, द वैल्यू ऑफ एन कंपेयर विल बिकम -1, फिर आपका ऊपर लूप जाएगा। नाउ आउटर लूप तो फिक्स 3 दफा चलना ही चलना है, लेकिन जब अब आपका इनर लूप चलेगा, दिस टाइम ये चलेगा बच्चों 1 से लेके 2 तक, फिर अगले दफा चलेगा बच्चों ये 1 से लेके 1 तक। सो आउटर लूप बच्चों जब पहली दफा चलेगा, इनर लूप चलेगा 3 दफा। आउटर लूप जब 2 दफा चलेगा, इनर लूप चलेगा बच्चों 2 दफा। आउटर लूप जब थर्ड टाइम चल रहा होगा, आपका इनर लूप चलेगा ओनली 1 टाइम। सो द टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर द आउटर लूप आर 3, और इनर लूप बच्चों पहले चला था 3 दफा, फिर चला 2 दफा, फिर चला 1 दफा। सो द सम इज 6। सो अगर मैं टोटल आइट्रेशंस निकालूं इनर लूप के एंड आउटर लूप की, the total iterations are 9. So you can see your array is already in sorted order, but still 9 iterations are going on. फिर भी बच्चों 9 दफा आपका लूप आइट्रेट कर रहा है, 9 दफा आपका लूप चल रहा है। So this is not good. अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नॉट गुड। सो बच्चों दिस इज वाई ये जो एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट का जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द बबल सॉर्ट। ये इनएफिशिएंट एल्गोरिथम कहलाता है। सर तो फिर एफिशिएंट क्या होगा? तो बच्चों एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। कल की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू सी द एफिशिएंट एल्गोरिथम ऑफ द बबल सॉर्ट, एंड along with that we are going to solve multiple past paper questions as well for the bubble sort कि एग्जाम में किस तरह का सवाल दे सकता है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस कोड और एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या होगा एंड सो ऑन। वी आर गोइंग टू टॉक मच मोर अबाउट दैट इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो यू कैन सी कि आपका एरे अरेंज नहीं है, आपका एरे सॉरी अरेंज्ड है ऑलरेडी, बट स्टिल 9 इटरेशंस आर गोइंग ऑन। So that's why this array is not considered to be efficient one. ये एल्गोरिथम आपके पास efficient एल्गोरिथम नहीं कहलाता। We are having an efficient algorithm of the bubble sort as well. And सर तो फिर आप डायरेक्ट efficient पढ़ाते, तो बच्चों आपके एग्जाम के अंदर दोनों एल्गोरिथम्स आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो यू शुड नो बोथ। आपको efficient भी आना चाहिए, आपको inefficient भी आना चाहिए। This was the inefficient one. अगली क्लास के अंदर बच्चों we are going to see the efficient algorithm of the bubble sort as well. आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाअल्लाह कल की क्लास के अंदर इंशाअल्लाह at 2 we are going to start with the inefficient algorithm of the bubble sort. Thank you. Allah Hafiz. Take care and stay safe.